Thank you very much. So I'm so happy that the finale went off well. It was a collection many years in the making, I will say, because these clothes take a lot of craft. These are not just the number of hours. When I say something like this takes, say, 2,800 hours of embroidery, it's not the 2,800 hours of embroidery today, it is the 30 years that Karigar has got in terms of experience. So we are banking on all of that. So it's a real heritage that is expressed in a modern way. It's been a wonderful moment. I was so happy to have Huma, who's been a dear friend and a dear muse for so many years, because she's confident, she's the muse of a reflection of what the modern Indian woman looks like, who's Indian yet global, multi-hyphenated, multi-talented, and women who hold their own. Strong women are my muses because they have agency, they have responsibility, and they enjoy fashion. Oh, lovely. So well spoken. I'm just happy to be here. I think walking for Nachiket is always a dream. He just understands the modern Indian woman, as he said, and I think the way he presents them, the way he dresses them is almost like a dream. So I always have fun collaborating with him, wearing him, and I just always hope that he always make clothes for me. Always. That's a promise. आई थिंक इस आउटफिट की खासियत ही एक तो कंफर्टेबल है, बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न इसका कट है, तो आप इसको बहुत सारी जगहों पे पहन सकते हो. जैसे नचिकेत ने बताया कि इसमें 2800 आवर्स लगे, कारीगरों ने उतने घंटे काम किया. और आई थिंक आज के ज़माने में जब सब कुछ एकदम इंस्टेंट है, फास्ट फूड है, चीज़ों की वैल्यू नहीं, दिस इज़ जस्ट समथिंग आप हमेशा रखेंगे, इसको चेरिश करेंगे, क्योंकि बहुत मेहनत से खून पसीने से बनाया गया. एंड आई थिंक कहीं ना ये फास्ट फैशन को छोड़ के थोड़ा सा हमको चीज़ों को उस तरीके से लेना चाहिए कि हम अपने ट्रेडिशन को प्रिजर्व करें, उसको रखें. सुनाई देगा? कुछ सुनाई नहीं देगा. हाँ. आई थिंक फैशन एक जरिया है जिससे आप एक वक्त को कैद कर लेते हैं, लेकिन मोर इम्पॉर्टेंटली गारमेंट्स में हमेशा मानता हूँ कि सस्टेनेबल स्टाइल जो है वो ऐसी है कि जो गारमेंट्स आप बनाएं आज पहन पाओ 10 साल के बाद भी पहन, करेक्ट, वो एस्थेटिकली रेलेवेंट हो, वो हाई क्वालिटी हो, तो जाके अब हमको बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, कम अच्छी चीज़ों की ज़रूरत है, जिसके लिए जो जिन्होंने बनाया है उनको फेयर वेजेस दिए जाए. हाँ जी. कैसे मैनेज करती हूँ मैं नहीं करती हूँ. मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे दोस्त हैं जो बहुत प्यारे कपड़े, बहुत सुंदर कपड़े बनाते हैं. एक पूरी हम लोग बहुत लकी हैं, पूरी आर्मी रहती है लोगों की, स्टाइलिस्ट है, मेकअप वाले. आई थिंक मेरा काम सिर्फ है कि मैं अपने काम पे ध्यान दूँ, जो कि एक्टिंग है. फैशन हर लड़की इंजॉय करती है, आई एम श्योर आप भी करती हैं. तो आई थिंक कहीं ना कहीं मैं फ़ैशन को इंजॉय करती हूँ. और मेरी फिल्में चाहे मैं सीरियस रोल करूँ या बहुत ही अर्दी या रियल पार्ट्स करूँ, ऑथेंटिक पार्ट करूँ, बट फैशन में आई थिंक थोड़ा मज़ा करना चाहिए. जस्ट वेरी हैप्पी. आई थिंक दिस इज़ आई थिंक अभी अगले महीने महारानी 4 आने वाली है, विच इज़ आई थिंक गोइंग टू बी माई 6th कोलैबोरेशन मिस्टर सुभाष कपूर विद कांगड़ा टॉकीज़. मैं तो उनको चढ़ाती हूँ कि आई एम वेरी लकी फॉर यू. Whether it's Jolly, the series, the film, franchise, or it's Maharani, the series, I think they all have been touched with very, very successful. And yeah, now we'll make another Jolly. Yeah. I think Maharani is I think a role that has changed my life. जो कुछ भी मैंने आई थिंक अचीव किया है उसका बहुत बड़ा श्रेय महारानी सीरीज़ को, रानी भारती कैरेक्टर को जाता है. सो आई ऑलवेज हैव अ वेरी स्पेशल प्लेस इन माई हार्ट फॉर दैट शो. एंड आई जस्ट होप ऐसे शोज और बने यार. आई थिंक उसका कनेक्ट ना कि ही रूरल या छोटे शहरों में है, बट आई थिंक बड़े शहरों में भी है. सो आई गेट अ लॉट ऑफ लव फॉर दैट सीरीज़. एंड आई एम जस्ट बस आप लोग देखते रहिए और हम लोग और सीजन बनाते रहेंगे. Thank you so much. Thank you. If I could describe my outfit as a movie title, can I quote a song actually? ये एक जिंदगी काफी नहीं है. Oh, very cool. How do you feel wearing that? I feel sexy. I feel empowered, and I feel glamorous. Thank you. Are we done? Yeah. Done.
ऐसी पकड़ लेते हैं। हाँ जी। It's so nice to see you both at the Times Fashion Week. So how did you experience watching the show live? Oh, it was lovely. I especially came for Deepti. I had invited for the fashion shows. Nikki was doing one in the house of Achal, yeah, correct. House of Achal. So both shows are very nice. And of course, they're here with Parash, a very dear friend. Parash, कैसा लगा भाई? Yeah, especially of course Karan is here, so I'm equally more excited and happy to meet a very old friend. Secondly, I think the show was fabulous. The outfits were very wearable because क्या होता है normally the outfits are very loud and out of the. जल्दी लाओ Designers here. So lovely to meet यामिनी जी Well, सर फैशन के बारे में देखा जाता है They keep liking my work more than 2 decades, and I'm trying to do something new to keep you entertained. So साड़ी आई थिंक इंडिया की तो सबसे पुराना जो अटायर है, ओरिजिनल अटायर है, दैट इज साड़ी, और वो तो पुरातन ज़माने से चलता आ रहा है. एंड आई ऑलवेज ट्राई टू मेक इट लाइक हॉट एंड 2025 कि अभी इस ज़माने की साड़ी मैं बनाने की कोशिश करती हूँ. एंड आई लव वेयरिंग साड़ीज़ बिकॉज माई मम इज़ अ प्रोफेसर, तो उन्होंने अपनी सारी लाइफ साड़ीज़ पहनी है, तो दैट इज़ वेयर द इंस्पिरेशन कम्स फ्रॉम. तो साड़ी तो आई थिंक इट्स अ नेक्स्ट लेवल फैशन बिकॉज इट्स संस्कारी एंड इट्स हॉट. इट्स लाइक सेक्सी संस्कारी. तो साड़ी में तो पूरा कॉम्बिनेशन बन जाता है ना, लाइक सेक्सी संस्कारी. फैशन वीक के बारे में बताइए. Fashion week is always it's always crazy, it's always amazing to be here. This is the second time that I'm attending, being in Mumbai, and I'm so excited to just go and see the fashion show. क्या? ये उधर से I saw
I'm good, thank you. How are you? Thank Tell you. us something about the ramp walk. How was it? How was the experience? Experience तो मेरा हमेशा अच्छा रहता है रैम्प वॉक पे. I always remember my time as a model when I used to walk in Paris and London and Berlin. तो जब भी मैं रैम्प पे जाती हूँ तो ऐसा फीलिंग हो जाता है, you know? What's the best part of it? The best part of this outfit is that it's so grand, you know. When you're on the ramp, you always feel like, okay, whatever. You feel like a princess. But with this outfit, I feel like it elevates even more, even further, you know, because this has such a long tail and you just feel like royalty when you're walking. Tell us something more about fashion. What's fashion for you? How do you define your fashion? Fashion for me, I mean, there is always different definitions for it as per how I'm feeling, right? I always feel like मुझे comfortable रहना मेरे लिए बहुत important है, you know. So I always try to wear stuff where I feel it's fashionable, but at the same time it's comfortable. But कभी-कभी जो मतलब red carpet के लिए जो चीज़ें होते हैं, जो कपड़े होते हैं, जो fashion होता है, वो comfortable नहीं होता है. तो फिर भी वो करना पड़ता है. So depends. Hang on, your new project is coming up. It's a great reunion. What would you like to say? You, Rooney, Yeah. you all are there in the project. Well, I'm very excited for Masti 4. I'm finally getting to play opposite Ritesh Deshmukh, who I love. I love his acting. I think he's an amazing human being. I know him and Genelia since a long, long time, but I never got to work with them. So finally getting to work with Ritesh is amazing. He is such a fabulous actor, and I feel like our pairing has been amazing. Thank you. Thank you so much. Hanji, hi. Tell something about the outfit. The outfit के बारे में बताना. एलनाज इज़ वेरी ब्यूटीफुल. दैट्स वाई स्पेशली मैंने इनके लिए ये कलर चूज़ किया. पहले मैंने इनके लिए रेड चूज़ किया हुआ था, बट मैंने इसको कैंसिल किया. मुझे लगा कि ब्लू इज Royal blue. रॉयल ब्लू इज रॉयल्टी. तो She's done a रॉयल्टी वाले के लिए fabulous job with the रॉयल. outfit, for sure. Thank you. I mean, I when I saw the sketches, I was like, it's a very grand outfit, and the way she's pulled it off, I think it's a beautiful, beautiful outfit, and she's going to design something for me for my next red carpet. Yeah. And tell us something about the ramp walk. Chand laga. Nice, nice. No words. Literally no words. Thank you. Thank you so much. Aaj. Thank you, darling. Thank you. Bye-bye.
I mean, I had butterflies for like the last week. Last night I did not sleep that well. It's just when you Rajiv's put in so much time and so much effort that I'm like, I just want my walk to be perfect. Yes. I want that like pizzazz to be there, and I think we nailed it. I think. Did we? Of course. Okay, Of good, we course. did. He's happy, I'm happy. I'm very happy. I'll let Rajdeep talk about the collection. Yeah, so the collection's inspired by a vintage town in Italy called Orvieto. And we've just combined all the motifs of the Duomo and all the ceramic ware. And that's about it. I think it just speaks for itself. Yeah. And I wanted something. I asked for something that was a bit open at the bottom so I could really walk and really strut and dance a little Of course, bit. it's all about the dance. Yeah. Thank you. और पूछ रहा है Lolo. What globally? How do you see India growing into a fashion? I mean, India has always been fashion, right? When I go back to America, I see all the Indianness coming through, but all of the designers really stretching out and going abroad is too cool. Like, I love it so much because India has everything. So I want the world to see all of it. Do you like Indian outfits? I love everything Indian. Why am I here only? I love the food, the people, the culture, the outfits, I don't know, everything's just so gorgeous. All of them. Sari, I'm starting to wear a lot more saris. I don't know, just anything. Like when I look at Western clothes now, I'm like, it's so boring, right? There's so much color and pattern and texture and mirror work. I love anything that has mirror work in it. Yeah. Thanks, guys. करण जी आप देखिए नाइस शूज पूनम जी आइए हेलो अरे इधर बुलाओ हाय पूनम लाइट में तो बुलाओ लाइट में आइए लाइट पूनम जी इधर है ना लाइट में या वॉक 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 आओ आओ बस होल्ड होल्ड हाँ थोड़ा पीछे पूनम जी एक वहाँ से आओ ना ऐसे वॉक सादा विदा पकड़ा लाइट में आई ना मैम
करण सर यहाँ पे करण सर सर वन सोलो थैंक यू करण सर रुको करण सर यहाँ पे सामने थैंक यू मैम यहाँ पे चलो थैंक यू मैम आ जाओ साथ में कर लीजिए डन थैंक यू
डिजाइनर कम So our collection is called the Midnight Romance. It's a collection for modern muse, somebody who is romantic, sensitive, bold, Yeah. seductive And all. Yeah. Okay. It's derived from blooming roses, fluttering birds, starlit skies. So something very romantic and feminine, but still quite bold. बेसिकली पूजा ने मेरी विश पूरी कर दी. पिछले साल मेरी शादी हुई थी और मैंने ट्रेडिशनल कलर नहीं पहना था एंड आज मैंने वो ट्रेडिशनल कलर पहन लिया एंड आई एम फीलिंग लाइक अ मॉडर्न ब्राइड नहीं मॉडर्न म्यूज. सो थैंक यू पूजा, थैंक यू सो मच. एंड इट्स लवली यार. भूल जाओ कि कितना भारी है वो तो हम भूल ही जाते हैं, बट इसमें डिटेलिंग बहुत अच्छी है. आई लव द डिटेलिंग. इट हैज़ बर्ड्स, इट हैज़ फ्लावर्स. It's all hand embroidered. Very nice. It has different types of बहुत work मेहनत लगी है techniques. basically. Yeah. It took us a month and a half to embroider with 15 karigars sitting day and night. Oh my god, that's Yeah. Surbhi, what would you like to say about, both of you, in fact, the question is posed to about Times Fashion Week and, Bombay Times has been doing this over and over and over Right. again, and it's like, pioneer in the fashion industry and Bombay. Yeah. So what are your thoughts about that? Of course, my association with Bombay Times Fashion Week goes a long way. This is my third year. It's always home ground and it's great to be on the ramp. Always you feel the jitters, you feel the nervous energy. But मैं green room में सुष्मिता मैम के साथ थी. मतलब उनकी दो शब्द ही I kind of felt like when I went on the ramp I got everything and she says own it and I did that, I hope. So yeah, it's great to associate with Bombay Times Fashion Week and with Pooja especially this year. It's been amazing. She's great. It's my first show ever. It's your So first that show was ever, so I'm also yeah. lucky that way. Yeah. That I could be your muse. Yes, So absolutely. it's a pleasure, yeah. It's a pleasure. बहुत अच्छा लगता है बॉम्बे टाइम्स फैशन वीक आने में. ये जो चहल पहल है ना, यही देखने मज़ा आता है. एंड एवरी टाइम यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू कौन अब वॉक करेगा. सो वी वेट फॉर दीज 3 days, फ्राइडे, सैटरडे, संडे. Anything else? थैंक यू. यस. बोलो. हाँ जी. बोलो. कौन सा काम, कौन सा वाला है? दुल्हन के अवतार में देख के खुश हुए आप लोग? How are you? Oh my God. Happy birthday. Lovely umrah. Lots of happiness. Always. Okay, come on. इनकी वजह से We do want to hear. Very ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? दिल से आई थिंक एक तो बहुत सालों से कर रही हूँ. As far as ramp walking goes, I've been walking the ramp since the last 33 years. और मुझे लोग बहुत पसंद हैं. So as an actor, I have to do everything with a camera in terms of an interaction, wait for a reaction. But when I walk the ramp, I see all of you in front of me. I see families sitting, I see friends sitting. And that feeling of a live interaction is so beautiful. It is my favorite thing. So confidence actually comes from the heart, from experience. जी.
ये एक्चुअली बहुत प्रेशियस है बिकॉज पहले तो ये टेम्पल ज्वेलरी है. आज के देवी शो का नाम देवी था एंड सोनाली जैन जस्ट आई थिंक किल्ड द कलेक्शन एंड डिड अ फैंटास्टिक जॉब द डिज़ाइनर एंड दिस इज़ वेरी स्पेशल बिकॉज दिस कलेक्शन बिलोंग्स टू हर फादर हु इज़ अ ज्वेलर. Why don't you tell them about it? I'm a designer. I'm a designer, but my father is a jeweler. So, it's a combo. So the daughter dressed me and I have Papa's jewelry. Hanji. Guys, please maintain a little silence. मैं बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हूँ. मैं रिलीजियस नहीं हूँ मगर मेरा जो धर्म है कर्म है वो सब इंसानियत है. उसका कोई नाम नहीं है. But spiritual, I am down to my last cell. So today, thank you to her. We got this amazing track because I really wanted to walk to Aigiri Nandini, and the minute it started only na, I had to be very in control. You don't know, I start dancing when I listen to this track. But today was a little well-behaved walk, so we had to do that. I'm so glad you noticed the track because we really love that song. दुग्गा मैं इनफैक्ट खुद भी बोलती हूँ और औरों से भी बुलवाती हूँ. कभी भी डर लगे, सहमा सा लगे, हिम्मत चाहिए होती है. आपने देखा नहीं होगा राम के पीछे धक दिल ऐसा करता है और फिर हम पीछे से खड़े होकर ऐसे करते हैं दुग्गा एंड देन यू वॉक इन. हाँ जी. One of the best things about, I think, any fashion week, most importantly Bombay Times Fashion Week, is that it allows and celebrates for new generation of designers who may not have had a lineage of 30, 40 years or 4 decades in the business. Point in case, even Sonali, I was actually so impressed that she has such an incredible sense of designing despite the fact that she's quite new to the profession of designing, to the art of designing. So it's nice that you give opportunities to different designers and celebrate them. But my favorite part of Bombay Times, I get to be the showstopper. Always. Yeah. जी. उतना टाइम नहीं होता है. वो आके गाने का क्यों सुनना है, चलना है, नहीं वो याद नहीं रहता. But whenever I come on the ramp, I feel a deep connection with people. वो मुझे पहले वॉक में भी याद है और आज 30 साल के बाद भी वो कनेक्शन फील होता है. बहुत. Thank you guys.
बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा है। 20 साल हो गए इस इंडस्ट्री में मुझे, और 20 साल पहले जब जॉनी गद्दार आई थी तो उसी साल में आई गॉट द चांस टू वॉक ऑन द रैम्प एंड फॉर बॉम्बे टाइम्स ओनली। 20 साल बाद इतने सारे फैशन शोज़ किए हैं, बट हर सुबह फैशन शो वाले दिन हो या शो वाले दिन हो या कोई भी फिल्म, मेरे पेट में कुछ गुड़गुड़ शुरू हो जाती है। आई डोंट नो, पता नहीं, ये मैंने इनसे नहीं कहा क्योंकि ये वैसे ही नर्वस थे इतने, और अगर मैंने इनसे ये बोल दिया होता तो ये शायद कहीं कहीं इनका भी पैनिक अटैक ना हो जाता। बट आई थिंक बहुत ही बेहतरीन शो रहा। क्षितिज जी के साथ काम करके, श्वेता जी थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। दोनों के साथ काम करके बहुत अच्छा लगा, और क्रिएशन तो आप देख ही रहे हैं इनका, इंडो वेस्टर्न रंग जो है आउटफिट का बहुत अच्छा लगा। मैंने इनसे कहा, रंग देखते ही मैंने कहा यार भाई आज तो लड़कियां पागल होने वाली हैं। इन 20 सालों में सबसे बड़ा बदलाव क्या नजर आया है? जब 20 साल पहले आपने शुरुआत की थी, क्राउड बढ़ गया है बट अच्छा लग रहा है कि यंग जनरेशन और आ गई है। मैंने आज बहुत सारे ऐसे सीनियर फेसेस भी देखे जो कि कितने सालों से रैंप पर हैं और आज भी वैसे ही दिख रहे हैं, इतनी ही खूबसूरती के साथ, इतने ही एलिगेंस के साथ रैंप पे चल रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि उनसे प्रभावित होता हूँ, इंस्पायर होता हूँ, बट यंग जनरेशन को देखकर और उनके क्रिएशंस को देखकर और एक्साइटेड होता हूँ। जी, टचवुड बहुत बहुत अच्छे से फिल्म गई, क्रिटिक्स ने बहुत सराहा, बॉक्स ऑफिस पे अच्छा फिल्म ने बिजनेस किया। अब इंतज़ार है उसका OTT नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ होने का, और उम्मीद कर रहा हूँ कि और तादाद में पब्लिक फिल्म देखें। जी सर, मैं हमेशा से पहली फिल्म से मानता हूँ कि मैं एक एक्टर हूँ, तो जिस किस्म का किरदार मुझे ऑफ़र किया जाए और मुझे अच्छा लगे तो मैं ज़रूर करूँगा, चाहे वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो। न्यूयॉर्क में एकदम ही पॉजिटिव था, प्लेयर्स में एकदम ही डार्क, तो मुझे वेरिएशन करना अच्छा लगता है, और ज़्यादातर अपनी ऑडियंस को थोड़ा मैं शॉक करने में मुझे मज़ा आता है, कि वो गेस करते रहते हैं कि क्या कर रहा है ये आज, अच्छा है कि बुरा है। तो जब मुझे पता चला कि नील सर इज गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ द शो, मेरा आधा स्ट्रेस खत्म हो चुका था। तो बेसिकली, और आई हैव ऑलवेज सीन हिम ऑन स्क्रीन एंड ही इज सच अ फैंटास्टिक एक्टर, एंड आई थिंक ही इज मोर देन एनेक्डोट आल्सो बिटवीन अस। यस, सो बहुत साल पहले मैंने एक रियलिटी शो किया था, और नील वाज द जज ऑफ दैट रियलिटी शो। सो आई हैव एन एसोसिएशन सिंस देन। तो मतलब मुझे तब भी लगा था कि यार आई विश आई बिकम अ डिज़ाइनर, मैं ऐसे डिज़ाइनर बन जाऊँ जहाँ पे नील कैन वॉक फॉर मी। आई थिंक टुडे इज द डे। थैंक यू। मैनिफेस्टेशन। Yes, this is what manifestation. one word for your outfit, about today, about this whole. I already saw the collection, before getting this, and when he sent me this outfit, I said yes, this is the outfit which I can carry on very nicely, and this is so, you can see the handwork, it is so beautiful, and yes. अच्छा, एक बदलाव मैं ज़रूर कहूँगा कि बहुत तगड़ा बदलाव आया है। ये पहली बार ऐसा है कि मैंने मेजरमेंट्स ना व्हाट्सएप पे भेज दिए इन्हें, और बिना ट्रायल बिना कुछ एकदम मेजरमेंट बखूबी से इन्होंने, यानी जो टेलरिंग की है, कट किया है, आउटस्टैंडिंग। सो दैट स्पीक्स वेरी हाईली ऑफ क्षितिज एंड हिज एक्सपीरियंस। थैंक यू जी, गॉड ब्लेस, थैंक यू गाइस, थैंक्स।
बहुत ही ट्रेडिशनल था सारा का सारा जो लुक था, जो उनका इंटायर कलेक्शन है, बनारसी सिल्क एंड एवरीथिंग इज़ ट्रेडिशनल. सो ये पूरा ही लुक ऐसा था, तो हमने दोनों ने एक साथ डिसाइड किया कि हम कुछ ऐसा करेंगे जो बहुत ट्रेडिशनल है. नो इंडो वेस्टर्न एट ऑल, वेरी ऑथेंटिक ट्रेडिशनल. You have no idea. I was sweating backstage. मुझे लगा कि कुछ ना कुछ होने वाला है आज. But I somehow managed, and I hope I looked graceful. I don't know. I tried very hard to make it look graceful. But बहुत खूबसूरत है, and I feel beautiful. And I think वो आपकी शक्ल पर दिखता है when you look and you feel good. जी. मुझको ट्रेडिशनल बहुत पसंद है, एंड ऑथेंटिक ट्रेडिशनल, मतलब नो कटिंग कॉर्नर्स की, क्योंकि ये पूरा फुल जरदोजी वर्क है. एंड हियर शी इज लाइक, प्लीज टेल Yes. व्हाट एन अमेजिंग. आई वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन. Thank you. So today's collection, as you all saw, was very Indian, very festive. It had all the Indian silks and all the beautiful Indian colors of purples and oranges and reds and yellows and ivories. And the piece she is wearing has beautiful hand zardozi, and it's all pure zari. So and the whole fabric is beautifully hand woven. So yes, and the collection is called Threads of Love. मुझे चित्रांगदा जी बहुत पसंद है, क्योंकि वो हमेशा खूबसूरती से प्रेजेंट करती हैं. How many times have I walked for you? Many times. I think so 5-6 times. Every time she comes to me, I'm like, really? Again, me? I love her. I love her. I mean, I don't know Absolutely how love many her. times. Yes, thank you. Bridal look है. ब्राइडल लुक This है is a ये bridal look. जी, ये ब्राइडल लुक ही है. आपने राइट जज किया. Correct. Red. I think लाल रंग से बेहतर कुछ होता नहीं. मुझे I personally love traditional लाल रंग. So red. बाद में बात करें इसके बारे में. Okay, that's it. Thank you. Thank you, bhai. I would like to say that I'm very honored to be wearing Archana Kochar. I love her collections. I've always loved all her work. और आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि ivory जो है, it's one of my favorite colors. And इसको पहन के मुझे बहुत Indian महसूस हो रहा है, but at the same time बहुत cool भी लग रहा है. I love the design. I love the detailing. I love the fact that, you know, there is this beautiful partition here. It just, I think we have to celebrate our bodies, we have to celebrate life, and we have to celebrate being Indian. So I'm very excited to be a part of Archana Kochar's family. मेरे fashion को I believe that it's very important to first be comfortable. अगर आप ऐसा कुछ पहन रहे हैं जिसमें आप ही comfortable ना हो तो वो आप पे जचेगा नहीं. तो मैं इसीलिए मेरी हमेशा ये कोशिशात रहती है कि जो भी आप पहने उसमें आप comfortable रहें. I'm feeling very comfortable. According to me, fashion is art, and I'm an artist, so I love experimenting with different designs, textures, colors, and today I'm having the best time ever. How do you like this? Yeah? Thank you. जी, मेरी कुछ फिल्में आ रही है. अभी मेरी एक लव स्टोरी रिलीज़ होने वाली है बहुत जल्दी. एक सीरीज़ है, इंटरनेशनल सीरीज़ है. एक फ़िल्म की शूटिंग अभी मैंने ख़त्म की है, एक स्टार्ट कर रहा हूँ. वो एक पैन इंडिया फिल्म है. एक शेखर कपूर साहब के साथ फिल्म कर रहा हूँ मैं. तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, तो आप दुआओं में मुझे याद रखिएगा. मैं आपको रखूँगा. Thank you so much. Thank you. Yeah?
फैशन वीक्स अपने में भी काफ़ी एक्टर्स को भी मैंने स्टाइलिंग करी है, तो वो दिन याद आ जाते हैं कैमरा के पीछे, बड़े मस्ती भरे दिन। आज यहाँ पर चल रही है वर्टिकल्स और अभी आने वाला है। आई एम सपोज टू शूट फॉर दैट दिस मंथ एंड कुछ और एक्साइटिंग अगले महीने आएगा, सो आई एम वेटिंग फॉर दैट गुड न्यूज़ टू बी शेयर्ड विद यू गाइज इन द फ्यूचर। थैंक यू सो मच।